Assalamualaikum students, all are fine. I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Today our unit is Unit 9, Forces and Action. Today we will read this lesson. Let's start reading. We are surrounded by forces no matter where we go and what we do. Pushes and pulls are in action all the time. For example, the air particles around you are exerting a pushing force on you, and the gravitational force of the earth is pulling objects downward all the time. Moreover, you are pushing the chair downward while sitting, but the chair is pushing you upward. Do you know when you throw a stone up in the air, why it falls to the ground? Why do we get tired when we walk for a long distance? It's due to the force of gravity and friction. Four forces act on objects all the time, but we cannot see them. Force can change state of rest or motion. It can bring stationary objects to motion or slow or even stop moving objects. अब वो क्या कह रहे हैं कि जो फोर्स है वो चेंज करती है अपनी रेस्ट को और मोशन हालत को. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में तो उसे स्लो कर देते हैं और अगर वो स्टॉप है तो उसे मूविंग कर देते हैं, मूव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू राइड अ बाईसाइकिल यू पुश द पेडल्स टू मेक इट मूव. जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो आप उसके पेडल्स को पुश करते हैं मूव करने के लिए. यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द बाईसाइकिल बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ फोर्स यू पुट ऑन पेडल्स. सिमिलरली, व्हेन यू पुट ऑन द ब्रेक्स ऑफ द बाईसाइकिल इट स्टॉप्स. यहाँ पे स्टेप दिया. फर्स्ट स्टेप, अगर आप बाईसाइकिल लेते हैं, सेकंड में आप उसको मूव करते हैं, जितनी फोर्स आप उस पर यूज़ करेंगे उतना स्पीडली वो चलेगी. स्लो करेंगे तो कम फोर्स लगाएंगे तो वो स्लो चलेगी. एंड देन अगर आप रुकना चाहते हैं तो आप स्टॉप कर सकते हैं. नेक्स्ट है, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन. फोर्स जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है. इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, इन अ फुटबॉल मैच a player passes the football to another player by pushing it in a specific direction. Force can change shape. Force जो है वो अपनी shape भी change करती है. It can change the shape of objects. For example, when you squeeze a plastic bottle by applying a pushing force on, or when you pull a rubber band, both changes their shape. Next is tension and compression. Have you ever played tug of war or pushed a spring down? Do you know which forces are used in both activities? The pull on the rope in tug of war is called tension, and the push to press the spring is called compression. The tension is normally exerted on cables, chains, ropes, and wires. A pulling force or tension stretches objects, while a pushing force or compression reduces the size of objects.
Amazingly, both forces work in pairs, and any imbalance between them can cause the collapse of a system. Have you ever walked on a bridge? All bridges have tension and compression in them. Today we will read this lesson here. Okay, thank you.